check. Hello. Yes. Guys, are we ready? Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right, good morning. Come on. So, friends, we were dealing with the topic of residential status and scope of total income. And yesterday's class, we have spent some good time on discussion about special cases in residential status. I'm sure we are clear with that, everybody. Chalo beta, let's once quickly revise, then we'll get back to our job. Tell me, guys, what is section 6.1? Basic condition for residential status of an individual. Bolo beta, what are the basic condition? First one, he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Next, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the relevant previous year. If any one basic condition is satisfied, what do we call him? Resident. अगर दोनों भी satisfy नहीं हुआ तो non-resident. But 3 special cases we discussed yesterday where first condition is only applicable. What is first special case? Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Number 2, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Correct, no, my dear friends? And in case of persons working as a crew of the ship, what is the important point is that date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. दोस्तों बराबर है? चलो, what is third special case? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. बराबर है बेटा? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. And the important point is that in third special case of Indian citizen or a person of Indian origin coming to India for a visit during previous year, if he satisfies first basic condition, we'll call him resident. If first one is not satisfied, then what will you do? We will check his total income. If his total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs, then we'll apply second modified basic condition. But if it does not exceed 15 lakhs, we'll directly tell non-resident. अगर 15 लाख के ऊपर है तो second modified condition देखेंगे. बोलो बेटा, second modified condition क्या है? He must be in India for 120 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the relevant previous year. Are we clear? दोस्तों सबको यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा? पक्का क्लियर है ना? एडिशनल कंडीशंस कौन से सेक्शन है? बोलो कितने? दो. What is the first one? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of 730 days or more during the 7 years preceding the previous year. दोस्तों clear है? I'm sure all these points are fully clear for all of us. पक्का बेटा? चलो my dear friends. Yesterday we were discussing some questions. And what was the last question we discussed yesterday बेटा? Fourth one. जिसका आंसर आप लोग क्या बोले थे? अच्छा, आप लोग नॉन रेसिडेंट बोले थे क्या? What was important point in that question was not how many days he has come during previous year. How many days he has come is not important. What is important is how many days he has come during the previous year. He has come for 190 days, but in the previous year he is there only for 45 days. When it is 45 days, he cannot satisfy any of the basic condition. So his residential status will become non-resident. सर लास्ट में डिस्कस कर रहे थे अभी, बट लिखने का टाइम नहीं मिला था तो हम लोग लिखना रोक दिए थे. क्लियर है ना बेटा? चलो लेट्स फिनिश राइटिंग. राइट डाउन, कम ऑन. फर्स्ट पॉइंट,
an individual is regarded as a resident. An individual is regarded as resident. Is regarded as resident if he satisfies any one of the basic condition if he satisfies any one of the basic condition given under section which section beta 6.1. Are we clear with that? Next paragraph. In the given case, comma, X is not an Indian citizen. In the given case, X is not an Indian citizen. In the given case, X is not an Indian citizen and not a person of Indian origin. Correct, no? In the given case, X is not an Indian citizen and not a person of Indian origin. Full stop. Accordingly, comma, he can satisfy any of the basic condition and can become resident. Full stop. However, comma, he is in India. However, comma, he is in India during the previous year. He is in India during the previous year for. He is in India during the previous year for. बोलो बेटा कितने दिन है इंडिया में? क्या बेटा? 45 days. He is in India during previous year for 45 days. Full stop. Hence, comma, he cannot satisfy any of the basic condition. Hence, comma, he cannot satisfy any of the basic condition given under section 6.1. He cannot satisfy any of the basic condition given under section 6.1 and shall be regarded as what beta? Non-resident. That's it. I hope you are clear with this point, everybody. Done. Chalo, question number 5. I told you to try. Did you see the question? क्या है आंसर आपको? ठीक है. X is what citizen? He, his parents, grandparents were not born in undivided India. That means what? He is not Indian citizen. He is not a person of Indian origin. However, his relatives, like brothers of his father, sisters of his father,
sisters, brothers of grandfather, grandmother were born in undivided India. All this is irrelevant for us. बराबर है ना बेटा? खुद या पेरेंट्स या एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, उतना ही तो है. बराबर है ना बेटा? He is in India as follows: 23, 24, 147. वेरी गुड. और 1, 2, 3, 4 साल कितना हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली ग्रेटर देन 365 डेज. 300 तो इधर ही हो गया, 140 तो इधर ही हो गया. बिफोर 1920 नील. अरे ये कितना हो रहा है टोटल, बोलो मेरे को एक बार. 490. आंसर इज RN/OR. क्यों? एक तो बेसिक कंडीशन सेकंड वाला सेटिस्फाई कर लिया, 60 एंड 365. एडिशनल में पहले क्या चेक करने को बोला मैं आपको? 7 साल में 730 डेज. इज दैट सेटिस्फाइड? वंस दैट इज गॉन, रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 देखने की जरूरत है क्या? नहीं. अगर एक भी एडिशनल गया तो विल बिकम RN/OR. दोस्तों क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? दैट्स इट. फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ X for aspect 24-25. RN/OR. I hope we are fully clear. Everyone, chalo, let's finish writing. In the given case, comma, Mr. X satisfies the second basic condition but cannot satisfy both additional conditions together. And shall be regarded as resident but not ordinarily resident. Clear beta? Chalo. Next question. Think very properly and give me the answer. What is that beta? X, 44 years citizen of India. He leaves India for the first time. When did he go? September 20, 2022 for working on project of his employer company, ABC Limited, Indian company. He will come back on October 10th, 2023. Now tell me, when they say in the question, he will come back on October 10, 2023, is he coming back for visit or is he coming back permanently?
बोलो बेटा. Exactly. Find out his status for assessment year 23 24, 24 25. यस ऑनलाइन गाइस, क्या है आंसर आपका? अरे आप क्या लिखने में बिजी है यार, आप लोग लिखो मत कुछ भी, है मेरे को बस जवाब दो. बोलो बेटा क्या लग रहा है आपको आंसर? दोनों में साल आर है क्या? ठीक है, फर्स्ट असेसमेंट ईयर 23 24 की बात करते हैं. इसमें आप आर क्यों बोले? AY 23 24 मीन्स प्रीवियस ईयर इज व्हाट? हाँ ठीक है, 173 डेज है. तो अगर 173 डेज है बेटा, then straight away answer is non-resident, no? Because he's an Indian citizen leaving India for the purpose of employment outside India. अरे समझे क्या मेरी पॉइंट? आप वर्किंग बराबर करें 173 डेज, बट ये चीज भूल गए आप, ये स्पेशल केस है. ये स्पेशल केस क्यों है? ये इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. और एक बार अगर स्पेशल केस आ गया तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है अपने को? 182, और ये भाई साहब कितना है? 173. तो व्हाट विल स्टेटस बिकम? नॉन रेसिडेंट. कितने लोग सही सोचिए? क्लियर है क्या? समझा क्या बेटा? नेक्स्ट ईयर 24 25, असेसमेंट ईयर 24 25 में स्पेशल केस अप्लाई होगा क्या? क्यों? 24 25 मतलब प्रीवियस से 23 24. 23 24 के लिए he has not left India for employment. He didn't leave India as a crew of Indian ship. He didn't come to India for a visit. He came back to India permanently. तो स्पेशल केस नहीं आएगा. अगर स्पेशल केस नहीं आएगा तो क्या मतलब है? बेसिक कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है. एंड व्हेन डिड ही कम बैक? अक्टूबर 10 2023. मतलब 23 24 में कितना दिन इंडिया में है ये? पहले भी 173 बोले ना आप, अभी भी 173. इतना एग्जैक्ट कैसा है भाई? श्योर? कैलकुलेट दे बेटा. अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 20 डेज, 173. ठीक है. ही इज कमिंग बैक ऑन अक्टूबर 10th. अक्टूबर 10th मतलब अक्टूबर में ही इज देयर फॉर 22 दिन, प्लस नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28, मार्च 31. एज इट इज आए क्या? ठीक है. तो असेसमेंट 24 25 मतलब प्रीवियस 23 24. 173 सेटिस्फाइड. 173 है, फिर भी रेसिडेंट, फिर भी ये नॉन रेसिडेंट है, फिर भी ये रेसिडेंट है. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये 60 एंड 365. समझ गए ना बेटा? और एडिशनल तो ये कैसे भी सेटिस्फाई करेगा. क्यों? 2022 में पहली बार इंडिया से बाहर गया हो, उससे पहले पूरा इंडिया में ही है, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा ना बॉस. दैट्स इट. तो आंसर इज फर्स्ट केस एनआर, I mean, assessment at 23 24 is non-resident. Assessment at 24 25 is
ROR. समझे क्वेश्चन? क्लियर है बेटा? मजा आया? पक्का? तो प्लीज अपने को जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते अपने को चेक करना है कौन सा असेसमेंट ईयर का पूछ रहे, उसका प्रीवियस ईयर क्या है और वो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ. स्पेशल केस आएगा, स्पेशल केस नहीं आएगा. स्पेशल केस आएगा तो 182 पे ध्यान दो, स्पेशल केस नहीं आएगा 182 या 60 एंड 365. क्लियर है ना बेटा? सबको कंट्रोल में आ रहा है ना बेटा सब्जेक्ट? प्लीज प्रोसीड. हेडिंग लिखो, साइड हेडिंग असेसमेंट ईयर 23-24. 2 साल का करना है ना अपने को. पहले असेसमेंट है 23-24 लिखो. असेसमेंट ईयर 23-24 और प्रीवियस ईयर असेसमेंट है 23-24 और प्रीवियस ईयर व्हाट बेटा? 22-23. लिखो फर्स्ट लाइन. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 during previous year 23, comma, X, an Indian citizen, during previous year 22-23, X, an Indian citizen, X, an Indian citizen, left India, X, an Indian citizen, left India for the purpose of left India for the purpose of what beta? Employment outside India. Full stop. Accordingly, comma. Accordingly, comma. He will be resident he will be resident only if he will be a resident only if he is in India, only if he is in India for a period of only if he is in India for a period of what beta? 182 days or more. days or more during the previous year. Friends, clear? Next slide. In the given case, comma, in the given case, comma, in the given case, comma, X is in India in the given case X is in India during the previous year, X
X is in India during the previous year for X is in India during the previous year for what beta? 173 days. 173 days. Full stop. Accordingly, comma. Accordingly, comma, the residential status of X accordingly the residential status of X for assessment year 23-24 the residential status of X for assessment year 23-24 would be non-resident since he cannot satisfy the first basic condition. Since he cannot satisfy the first basic condition. दोस्तों clear है? Everybody? Right. Next, again put the heading assessment year 24-25. Assessment year 24-25. In previous year 23-24, in previous year 23-24, X has come back to India X has come back to India permanently. X has come back to India permanently and not for the purpose of visit. And not for the purpose of visit. Full stop. Accordingly, comma, it is not covered under special case. Accordingly, it is not covered under special case. Accordingly, it is not covered under special case. बराबर है बेटा? Next line. During previous year 23-24, during previous year 23-24, comma, X is in India for during previous year 23-24, comma, X is in India for 173 days. 173 days. Full stop. Accordingly, comma, he can satisfy. Accordingly, he can satisfy the second basic condition. He can satisfy second basic condition and also both additional conditions together. And also both additional conditions what beta? Together.
full stop. Hence, comma, the residential status comma, the residential status of Mr. X would be resident and ordinarily resident. Guys, clear? Everybody, I think this question I understood for all of us. So almost we have done about 6-7 questions on residential status. I believe that we got good clarity on this points. Everybody, दोस्तों रिप्लाई दो एक बार. चलो बेटा, बाकी क्वेश्चन बाद में देखते. वापस आ जाओ. चलो बोलो. What is section 6.1? Basic condition for residential status of an individual. बोलो क्या है basic condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. And 3 special cases we have learnt. Correct, my dear friends? So what is section 6.6 beta? Additional conditions. सबको यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? Now let's get back to some concept. Listen, friends, we have got an interesting section known as section 6.1a. Which section beta? Section 6.1a, which deals with the concept of deemed resident. So name only says, what sir? Deemed resident. When we say deemed resident, that means what? First of all, he is not a resident as per basic condition. But we are still treating and assuming him as a resident. बराबर है ना बेटा? अगर basic condition satisfy किया, तो deemed resident बोलने की जरूरत ही क्या है? Resident ही बोलेंगे ना? तो deemed resident क्यों बोलना है? दोस्तों, but basic condition satisfy नहीं किया, फिर भी हम उसको deemed resident बोल रहे हैं. Based on 3 important conditions. They told satisfy 3 conditions. We'll call you as deemed resident. Condition number 1. He must be an Indian citizen. He must be an what beta? His total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Already पढ़े ना अपने ऐसा पॉइंट? बराबर है ना बेटा? सुनो, तीसरा कंडीशन क्या है? सबसे डेंजर पॉइंट. सुनो, सर, heard of a country named as Dubai? Heard of a country named as Mauritius? Heard of a country named as Cayman Islands, Panama Islands? What is the common point between all these places? What I told. That's it. That is the straight answer. They don't have tax. Technically, they are called as tax havens. They are called tax havens. Heaven, heaven. Heaven बेटा, heaven. मतलब गारंटी नहीं है, शायद heaven जाएंगे. हाँ, exactly. So बराबर है ना बेटा? So they are called what, my dear friends? Tax havens. There is no tax in that country. अरे बराबर है ना बेटा? Now what government of India is telling is, if there is a person who is an Indian citizen, his total income is greater than 15 lakhs. Third point देखो, what danger point है देखो यार. Not liable to tax in any other country. By reason of his residence, domicile, or any other criteria
of similar nature. Any other criteria of what बेटा? चलो बेटा, सिंपल सी बात है बेटा. सर लेट अस से देयर इज वन पर्सन मिस्टर पिंग पोंग. क्या नाम है बेटा इसका? पिंग पोंग. पर वो इंडियन सिटीजन है. अरे इंडियन सिटीजन का मतलब जरूरी है कि हमेशा इंडिया में रहता वो? नहीं ना बेटा, वो बाहर भी रह सकता है ना. एग्जैक्टली. सो एक बंदा का नाम है पिंग पोंग, पर वो बंदा इंडियन सिटीजन है. His total income is greater than 15 lakhs in India. Okay, sir, and he is sitting in Mauritius, not paying any tax in Mauritius. He is not paying tax in Mauritius because Mauritius पता है ना, अफ्रीका के बाजू में एक छोटा सा आइलैंड है. He is not paying tax in Mauritius because Mauritius there is no tax. Indian government is telling, अच्छा बेटा, तो बाहर टैक्स पे नहीं कर रहा है. एक काम करेंगे, you are called as डीम्ड रेजिडेंट. आजा. ही इज टेलिंग डीम्ड रेजिडेंट. क्या बकवास है? 182 नहीं हूं मैं इंडिया में, 60 भी नहीं हूं, साल में 10 दिन आता इंडिया में मैं. आई विल कम टू इंडिया ओनली फॉर 10 days इन अ ईयर. हाउ कैन आई बी अ रेजिडेंट? देन गवर्नमेंट इज टेलिंग, दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग. वी आर नॉट टेलिंग यू आर रेजिडेंट, वी आर कॉलिंग यू एज डीम्ड रेजिडेंट. समझ गए? इनडायरेक्टली एक लाइन बोलो क्या? इंडियन गवर्नमेंट इज टेलिंग, ऐसा आदमी कोई मिल गया जो कोई भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, अपन उसको इधर पकड़ लेंगे. पर किसको पकड़ेंगे? सिर्फ हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड दैट टू हिज टोटल इनकम इज मोर देन 15 lakhs. जिसका 15 लाख के नीचे, उसको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पकड़ने में. क्या तो मिलता है उससे टैक्स. अरे समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी फ्रेंड्स? चलो, हु इज अ डीम्ड रेजिडेंट? ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. His total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. He is not liable to tax in any other country by reason of his residence, domicile, or any other criteria of similar nature. Clear? By reason of his what? Residence. मतलब घर. Domicile मतलब normally वहीं पे रहता है वो. Domicile means where you usually stay is called domicile. डोमिसाइल बोलते हैं उसको. डोमिसाइल, वेर यू नॉर्मली स्टे. डोमिसाइल और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ व्हाट? सिमिलर नेचर. गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी? ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नेम वी जस्ट डिस्कस्ड? डीम्ड रेजिडेंट. अब एक पॉइंट बोलता सर, सुन लो ध्यान से, मजा आ जाएगा. सर, इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट, अगर ग्रेटर और इक्वल टू 182 है तो क्या बोलेंगे? रेसिडेंट. एंड दिस रेसिडेंट कैन बिकम ROR और यू माइट बिकम RNOR. बराबर है ना बेटा? दोस्तों अब देखो, ग्रेटर और इक्वल टू 182 नो. नो, फिर क्या करते अपन? टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 lakhs. नो. क्या है आंसर? अगर यस, सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू 120, ग्रेटर और इक्वल टू 365. बराबर है ना बेटा? अगर नो तो नॉन रेसिडेंट, यस तो रेसिडेंट. अगर एक बार रेसिडेंट बन गया तो क्या बन सकता है? ROR या RNOR. But the answer is he will always become RNOR. समझे में क्या पढ़ा है आपको? क्या पढ़ा है मैं बोलो? सिंपल वन लाइन में बोलो क्या मैं क्या बोला? सर नॉर्मली अगर एक बंदा रेसिडेंट बनता है, अगर एक बंदा रेसिडेंट बनेगा वो ROR भी बन सकता है, RNOR भी बन सकता है. बट अगर एक बंदा रेसिडेंट बना सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन की वजह से, वो ROR कभी नहीं बन सकता, वो RNOR ही बनेगा, भले एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे. Getting what I am saying, everybody? Speak out, my dear friends. Now I'll tell in English language. Okay, English. If a person becomes a resident by satisfying second modified basic condition, then he will never become ROR even though additional conditions are satisfied. He will always be a RNOR. समझे क्या बेटा? In the same way, my dear friends,
इधर जो बंदा बन गया डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट ऑल्सो इज ऑलवेज RNOR. उसको ROR नहीं बनाएंगे. यू माइट आस्क फर्क क्या पड़ेगा सर, ऑलरेडी पता है अपने को. अगर ROR है तो इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों भी टैक्सेबल. RNOR है फॉरेन इनकम टैक्सेबल ओनली इन 2 केसेस, बिजनेस इनकम कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशनल इनकम सेटअप इन इंडिया. याद है ना बेटा. तो ROR हो तो RNOR है तो फर्क पड़ता है ना बेटा. अगर ROR बन गया तो पूरा का पूरा फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा. अगर RNOR है सिर्फ 2 ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल है. अगर NR है तो उसको फॉरेन इनकम हाथ भी नहीं लगाते. हाँ याद है ना चप्पल. वंडरफुल दोस्तों. क्लियर एवरीबॉडी. सुपर डुपर पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स. आर वी क्लियर? पक्का. प्रोसीड. प्लीज पुट द हेडिंग इन योर बुक. डीम्ड रेसिडेंट. डीम्ड रेसिडेंट. डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(a). First point, an individual shall be treated as deemed resident if the following conditions are satisfied. The following conditions are satisfied. Number 1, he must be an what beta? Indian citizen. Number 1, he must be an Indian citizen. Number 2, his total income bracket other than foreign sources. His total income bracket other than foreign sources bracket close. His total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Last point, he is not liable to tax. He is not liable to tax in any other country. He is not liable to tax in any other country by reason of his domicile. By reason of his domicile DOMICILE, domicile or residence. Point to be noted. Number one, deemed resident is always RNOR. Correct beta? Deemed resident is always RNOR. दोस्तों क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2, इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin coming to India
Indian citizen or a person of Indian origin coming to India for a visit during the previous year. Indian citizen or a person of Indian origin coming to India for a visit during the previous year. Coming to India for a visit during previous year and satisfying the second modified basic condition. And satisfying the second modified basic condition. And satisfying the second modified basic condition shall always be. And satisfying the second modified basic condition shall always be, what beta? Shall always be treated as RNOR. चल अगर एक बंदा ROR है एक बंदा RNOR है तो फर्क तो पड़ेगा ना बेटा दोस्तों. एवरीबॉडी पक्का क्लियर विद दिस पॉइंट? प्लीज रिप्लाई बेटा. That's it. So with this discussion, my dear friends, we are done with the concept of residential status for an individual. अरे सच में बेटा, बट बाकी में टाइम नहीं लगेगा. सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ने के लिए आपको दो तीन दिन लगे ना, बाकी सब अपन 15 मिनट में खत्म करते हैं क्योंकि बाकी सब में कुछ है ही नहीं. इंडिविजुअल में ही प्रॉब्लम है बिकॉज एक बंदा एक जगह रुक नहीं सकता. अरे बराबर है ना बेटा, लॉजिक से बात है. इंडिविजुअल गोइंग कमिंग ऑल टाइम पास ही इज ओनली डूइंग. कंपनी कैसा टाइम पास कर सकता है वो? कंपनी जाके आएगा कैसा? मेमोरेंडम लेके, आर्टिकल्स लेके, क्या बेटा MOA लेके जाएंगे क्या? तो फिर बराबर है. कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स एन आर्टिफिशियल बॉडी. सिंपल 2 मिनट में खत्म कर देता मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स. इंडिविजुअल के लिए टाइम लगेगा ज्यादा बिकॉज ही इज कमिंग गोइंग नॉट एबल टू कंट्रोल एट वन प्लेस. फ्रेंड्स करेक्ट नो? एवरीबॉडी सिंपल सी बात है बेटा. अपने कोई नहीं रुकता है, कंपनी ये सब चुपचाप सुन लेते बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है. जो भी आर्टिकल्स में बोलते हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों. एवरीबॉडी पता है ना मेमोरेंडम आर्टिकल्स? अच्छा आज ही पढ़ाएगा, रोज ही पढ़ रहे. हाँ वंडरफुल, वही काम है, रोज ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली. कैन वी प्रोसीड? चलो बेटा, व्हाट इज सेक्शन 6(1)? कितने कंडीशन है? व्हाट इज सेकंड वन? He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Additional condition number 1. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Additional condition 2. He must be in India for a period of 730 days or more during the 7 years preceding the previous year. सबको क्लियर है? पक्का बेटा? All of us? That's the story of residential status of an individual. Now, my dear friends, let's talk about the residential status of HUF. HUF stands for Hindu Undivided Family. समझ गए बेटा? Hindu Undivided Family. दया भागा लॉ, मिताक्षरा लॉ, बराबर है ना बेटा? One time what has happened, I was sitting in office doing some work, one client has come, he came and told सब कुछ काम था. मैं बोला बोला ना बेटा क्या काम है? Then the client was telling साहब एक हुफ बनाना है. बोला हुफ बनाना है? अबे हुफ बनाना क्या होता भाई? मैं 2 मिनट समझा ही नहीं मैं क्या बोल रहा है वो, because I am not used to that word called हुफ. किसको मालूम हुफ क्या होता? बोला हुफ बनाना क्या होता सर? बोला सर शादी के बाद बच्चे के बाद हुफ बनाते ना सर. बोला शादी के बाद बच्चे के बाद तो पागल हो जाते हैं, हुफ क्या होता है? तो वो then that person was telling सर अलग पैन कार्ड मिलता ना सर, फैमिली के बाद एक अलग पैन कार्ड आता है, ऐसा रहता है ना सर, उसको अलग से 2.5 लाख एग्जम्पशन आता है. तब मेरे को समझ में आया अच्छा
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF बोल रहा है ये। हुफ। समझ गए ना बेटा? तो प्लीज, तो शॉर्टकट कभी कभी यूज करते तो हुफ हुफ मत बोलो यार ऐसा, प्लीज सर। क्लियर नो? एग्जैक्टली। एक बार ऐसे भी हुआ था, एक बंदा मेरे को फोन पे पूछ रहा था, साहब एक पान बनाना है। पान बनाना है? क्या पान बनाना है रे? मीठा पान, कलकत्ता पान। नॉनसेंस, पान बनाना है, दैट इज नॉट पान, पैन। प्लीज सुने ना, पैन, व्हाट इज पैन? परमानेंट अकाउंट नंबर। किस किस के पास है यहाँ पे? बाप रे बाप, मेजॉरिटी लोगों के पास, सबके पास ऑलमोस्ट यार। पैन फुल फॉर्म इज व्हाट? परमानेंट अकाउंट नंबर। आप लोग पैन क्यों लिए मुझे बोलो? अच्छा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए। अरे आपका माइनर अकाउंट बिना पैन का भी खुलता है, कुछ भी मत बोलो मुझे, हाँ हुफ मत बनाओ मुझे। बोलो आप लोग पैन क्यों लिए? 18+ हो गया तो पैन लिए, ठीक है। पैन का फायदा क्या है? पता नहीं है सर, पापा बोले साइन करो, साइन कर दिए। हाँ, डीमैट अकाउंट खोलना था, उसके लिए पैन चाहिए था, ठीक है। भाई साहब को शेयर ट्रेडिंग करना था, तो उसके लिए पैन मैंडेटरी है। डीमैट अकाउंट खुलता ही नहीं है बिना पैन का। सर पैन is an identification number which is given by the income tax department. A person can file income tax return only if he has got a PAN. And lot of places, like when we open a bank account, when we want to deposit more than 50,000 in a bank account, for various transactions, PAN is a mandatory document. You want to buy a car, again PAN is mandatory document. You might ask, अरे अच्छा है सर, ये syllabus में है क्या? हाँ, we have one chapter called return of income. There we will learn what are all the cases where PAN is mandatory. अब एक क्वेश्चन है, PAN कितना डिजिट का होता है? ट्वेल्व। अभी 12 नहीं है ना बेटा, देख ले अभी जो बोले 12, आधार पे 12 होता है भाई। PAN is only 10. PAN is only 10. Some of them counted also. हाँ 10। क्या मैडम? नंबर से, अल्फाबेट से? हाँ, PAN is a alphanumeric code. PAN is basically a 10-digit alphanumeric code. बराबर है बेटा? PAN में बेटा हमेशा 4th letter for people like us will be P. चेक करो, उसका स्विच कहाँ पे नहीं पता यार। सर सुनो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैन इज हाउ मेनी डिजिट? 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसपे 4th लेटर इज माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज, इन केस ऑफ इंडिविजुअल यू विल फाइंड P, फॉर कंपनीज यू विल फाइंड C, फॉर पार्टनरशिप फर्म यू विल फाइंड F. इफ यू वांट यू चेक नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना बेटा? एंड 5th लेटर रिप्रेजेंट्स योर सरनेम फर्स्ट लेटर। हाँ बराबर है ना बेटा? एंड 1 2 फ्रेंड्स, मेरा पैन नंबर याद ही नहीं है, बराबर है ना बेटा? दिख रहा है चेहरे पे बेटा? आपका पैन में 5th लेटर सर ने फर्स्ट लेटर है ना? है ना? हाँ यस यस दोस्तों, क्लियर है? अरे देयर आर प्रैक्टिकल थिंग्स मैन, यू शुड नो व्हाट इज देयर इन पैन। पैन हमने क्यों लिया? फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स का कोई लॉजिक नहीं है, लास्ट वाला इज अ चेक डिजिट, रैंडमली असाइंड, randomly assigned. In PAN, it is always 5 alphabets, 4 numbers, again alphabet. सिर्फ 4th वाले का 5th वाले का ही लॉजिक है,
fourth one represents type of person, fifth one represents surname first letter. समझे क्या? 12 डिजिट नहीं है, सिर्फ 10 डिजिट है. जीएसटी 15 है, जीएसटी वाला है. चलो, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? अभी आगे चले. चलो, HUF, हुफ. चलो, HUF फुल फॉर्म Hindu undivided family. Now what we told in the law is that in case of HUF, see here, if control and management, what beta? If control and management is wholly or partly in India, we'll call him as resident. If control and management is wholly outside India, we'll call him as non-resident. Chalo beta, come on. HUF, what is the story? If control and management is wholly or partly in India, we'll call it as what? Resident. And if control and management is wholly outside India, we'll call it as non-resident. When I say control and management, what does control and management mean? Control and management का मतलब क्या है? Daily controlling. When we say control and management, my dear friends, practically there are two important words. These are very clear. Boys, आपने को ज़्यादा समझ में आता है. That is something called de jure control, de facto control. De jure control means who is supposed to control. De facto control means who is actually controlling. Income tax says what is important is de facto but not de jure. For example, in a house, who is supposed to control is father, but who actually controls is mother. Boys, आपने को कभी कुछ चाहिए तो सीधा पापा के पास जाते क्या अपन? है ना अपने पास इनडायरेक्ट रूट? अरे मम्मी है ना यार बीच में, मम्मी को बोलेंगे, मम्मी को पूरा समझा देंगे और मम्मी को बोलेंगे पापा को समझा दो आप. अरे बराबर है ना बेटा? Sir, we all belong to that generation, amazing people who are all lucky people where our parents will completely listen to whatever we tell. You might tell, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं होता है बेटा. Next generation is not going to be like that. Our next generation is going to be dangerous. The reason because we are all tech people. आपने को अपने बच्चे अपने को पागल बनाएंगे तो अपन नहीं बनते, क्योंकि अपने पास फोन में सब कुछ है. करेक्ट नो? बट मम्मी पापा का ऐसा सीन नहीं है ना. अपन आज के डेट में मम्मी पापा अपन ही बता रहे कि फोन में क्या है क्या नहीं है. अपने को अपने बच्चे बताएंगे क्या? अपने बच्चों को अपन दिखाएंगे बाद में फ्यूचर में. Friends, yes or no, friends? Generation is changing. We all have that kind of innocent parents who will listen to us, to whatever we tell, because they believe whatever we tell is full and final. अगर अपन उनको बोल देते इंस्टाग्राम में एक फोटो अगर पोस्ट कर दिए, अब वो फोटो सब जगह आ जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, अच्छा ऐसा बेटा ठीक है बेटा ऐसा करते हैं. बराबर है ना? कितने पेरेंट्स यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज करते? कितने लोगों का पेरेंट्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं? अच्छा, मेरी मम्मी को थोड़े दिन पहले सिखाया उनको मैं. माय मॉम वाज आस्किंग कि फिर सब लोग फेसबुक पे कोई फ्रेंड्स नहीं है आजकल, इंस्टा पे जा रहे सब लोग, ये इंस्टा क्या है बेटा? बोला ठीक है मैं बेटा आपको दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम क्या होता है. जब से मैंने उनको दिखाया मेरा हर पोस्ट को लाइक कर रहे हो. मैं जो भी शेयर करता जो भी पोस्ट करता हर चीज को लाइक करते जा रहे हैं अभी. That is how it is. No, they are innocent, boss. So, getting my point, everybody. So, de jure control means who is supposed to control, but de facto control means who is actually controlling. Income tax says what is important is not who is supposed to control, who actually controls. And in Karta, who actually controls is Karta. Sorry, in HUF, who actually controls is Karta, because he is the person who has got the decision-making power. Friends. यस और नो सर? ठीक है, रियलिटी थोड़ा सा अलग है कि अपन अपने हिसाब से जो अपने को अच्छा लगता है वो करते हैं अपन. मम्मी पापा भले कुछ बोले नहीं सुनते अपन, विल लिसन टू देम और यू विल टेक योर ओन डिसीजन. नो नो प्लीज लिसन, रेस्पेक्ट देम. क्या हो बेटा? HUF concept is in India only. It's not there in outside India.
कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर हो सकता है ना। अरे एचयूएफ इंडिया में कर्ता बाहर बैठे सोए, क्या बोल रहे यार, हो सकता है ना बेटा। एचयूएफ इंडिया में फैमिली पूरा इंडिया में बैठे, कर्ता बाहर बैठा है, अब क्या कर रहे मत पूछो, मेरे को नहीं मालूम। कर्ता बाहर बैठे सोए, तो एचयूएफ इज कंट्रोल्ड फ्रॉम वेयर, आउटसाइड इंडिया। इफ इट इज कंट्रोल होनली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, व्हाट डू यू कॉल इट देन? इसलिए बेटा मैं आपको बोला था 2 मिनट में अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसमें पढ़ाने का क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में खुद बताएंगे आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, बाहर है, क्या है। आपने कुछ कैलकुलेट करना है क्या, कितने दिन आया कितने दिन गया, तो खत्म ना यार। अगर एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है तो कहानी खत्म। अगर एचयूएफ रेसिडेंट है फिर कहानी, दैट इज we will look at additional conditions under section 66. same condition, सेम है बेटा, कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेटिस्फाई करे आर ओवर एनी वन और नन आर एन ओवर। दिस सेक्शन इज 62, दिस सेक्शन इज 66। तो वहां पे था 61 66, यहां पे है 62 66। कॉन्सेप्ट खत्म। 66 जो ऑलरेडी अपने को पता है ऑलरेडी। 62 में क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है बेटा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट। सम आर टेलिंग ऐसा रहना चाहिए, अच्छा गुड, बराबर है दोस्तों, क्लियर है। ओवर, टेक इट, टेक, टुक, टेकन, वाओ। Put the heading residential status of HUF and take this. अरे आज आपको क्वेश्चन क्लास नहीं है ना? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF पहले लिखो ये, क्या बेटा, शो ऑफ हैंड्स वोटिंग, कंपनी सेट का यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते, तो बाकी जिसका वो पास नहीं हुआ रेजोल्यूशन, वो लोग बोलेंगे फिर माइनॉरिटी हो, इंटरेस्ट हो गया हमारा, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। हाँ अच्छा मुझे एक्चुअली आज सुबह पता चला आपका कॉस्टिंग क्लास नहीं है, अगर कल ही पता चलता तो अच्छा रहता था। अच्छा 2 दिन पहले बुक कर लिए क्या? बुक कर दिए, क्या कर सकते हैं। क्या श्रेयस, क्या कर रहे हैं भाई पीछे बैठ के? ठीक है, समझ गया ना। HUF है तेरे पास? हाँ, HUF नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सिर्फ इंडिविजुअल पैन कार्ड ही है। HUF का अलग पैन कार्ड आता है, पता है आपको, जिसमें फोटो नहीं रहता है।
अपने पैन कार्ड में फोटो आता है ना, एचयूएफ पैन कार्ड में फोटो नहीं आता है, और उसमें फोर्थ लेटर एच होता है एचयूएफ में। ऑनलाइन में कोई बोल रहा है सर संडे फ्री है, कोई भी टाइम चलेगा, क्या बात है यार। 6166 basic and additional conditions for an individual. 6266 basic and additional for HUF. दोस्तों, what is the basic condition for HUF? Control and management is wholly or partly in India. Resident wholly outside India. That's it. HUF easily हो गया ना। नेक्स्ट अभी देखो, कंपनी। Some are asking, it's a private company, public company? Company is a company. Somebody registered under Companies Act 1950, 2013 or any other earlier law, control. For income tax, company is a company. ठीक है ना बेटा? So, for company, my dear friends, residential status is given by section 63. Listen first, then you write. Two categories. What do you think? Resident, non-resident. Wonderful. First category is Indian company, foreign company. Indian company always a resident. Now what is Indian company? Indian company is a company registered under Companies Act 2013 or any other. पता है ना आपको, इधर भी कोचिंग ले रहे हैं, वही तो पढ़े होंगे सबसे पहला दिन लॉ का। हाँ करेक्ट नो सर? चलो, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेसिडेंट, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? स्पीक आउट। सो व्हेन कैन इंडियन कंपनी बिकम नॉन रेसिडेंट? नॉट पॉसिबल, जब वो इंडियन कंपनी ना हो। My God, crazy answer sir. So Indian company, what sir? Indian company is always a resident. Indian company is always a resident. Student is asking, sir, ROR, RNOR? Resident. Student is again asking, sir, ROR, RNOR? Resident. Again asking, sir, ROR, RNOR? Resident. क्या सर, क्या मजाक कर रहे सर? करेक्ट ही बोला बेटा। Other than individual and HUF, there is no other case where there is a concept of ROR and RNOR. Individual HUF छोड़ के बाकी सब केसेस में only दो classification, resident, non-resident. That's it. चलो, other side, who is there? Foreign company. नहीं रे वाह, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पोएम इज होनली इन इंडिया। पोएम जॉनी जॉनी, ट्विंकल ट्विंकल। हाँ सर, पोएम स्टैंड्स फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. Place of effective management is the place where key managerial decision making is done. Place of effective management is the place where key managerial decision making is done. I am sure आपको ऑलरेडी 10 लेक्चर तक लॉ का खत्म हो चुका है. आप ये सुने होंगे, शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट, डायरेक्टर्स आर डिफरेंट. Decision making is not done in the annual general meeting, but decision making is actually done in the board meeting. बराबर है ना बेटा? All the decision making is done by the board of directors only. In the board meeting only they take all the decisions. They cannot go beyond their superficial powers and tell whatever we want we will do. Lifting of corporate will, all that they can't do. ठीक है ना बेटा? सर हमें भी थोड़ा थोड़ा टैक्स छोड़ के दूसरा भी कुछ आता है थोड़ा. चलो, पोएम इज होली इन इंडिया. क्या बोलेंगे बेटा? अरे सवाल ही नहीं है, होली इन इंडिया है. पोएम इज होली आउटसाइड इंडिया. तो पार्टली है, तो होली और पार्टली
आउटसाइड इंडिया, मतलब थोड़ा भी बाहर है, नॉन रेसिडेंट. बट इफ यू सी हियर इन HUF, wholly or partly in India, what was the answer? Resident. But for company, foreign company, partly in India, partly outside India, answer is non-resident. Foreign company will be resident. Foreign company will be resident. वापस repeat कर रहा बेटा. Foreign company is resident only if poem is wholly in India. समझे क्या बेटा? Foreign company is a resident only if poem is wholly in India. Poem क्या होता है? Place of effective management. समझे क्या? Friends, getting clarity? All of us, my dear friends, CA फाइनल में वापस कहानी आएगा ये बहुत सारा. Anyways, इंटर लेवल पे तो इतना ही है. समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर है? कोई MNC? ऐसा कैसे बोल सकते हैं कोई भी MNC नॉन रेजिडेंट होंगे? जरूरी है क्या? जरूरी है क्या जितने भी MNC इंडिया में है हर एक फॉरेन कंपनी का ब्रांच है इधर? बहुत सारे लोग ब्रांच के बिना सब्सिडी भी बनाते हैं इंडिया में. सब्सिडी क्या होता है? होल्डिंग मोर देन 50%. अगर सब्सिडी बनाए, सब्सिडी कंपनी इज नॉट ए फॉरेन कंपनी, नो. सब्सिडी कंपनी इज व्हाट कंपनी? इंडियन कंपनी. वंस इंडियन कंपनी, ऑलवेज ए रेसिडेंट. तो आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते MNC का हमेशा नॉन रेजिडेंट होता है, नहीं. बराबर है ना बेटा? सर, if a foreign company wants to come to India, they can open a branch in India or they can have a subsidiary company in India. If they have a subsidiary company in India, subsidiary company is a separate company altogether, no? जिसमें एक कंपनी को मोर देन 50% होल्डिंग है. ये समझ रहे हैं? पता है ना आपको ये ब्रांच, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी. Which section all this? 6.3. सर क्लियर है ना? सिंपली है ना? प्रॉब्लम नहीं है ना ज्यादा? जितना इंडिविजुअल में मेहनत ली है उसमें तो कुछ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है. ये लिख लो. ये हो गया कंपनी की कहानी. पोएम. आज एक दो तीन लोग मिसिंग है इधर उधर. लिख लिया इतना जल्दी? क्या दोस्त? क्या प्रणव, समझ में आया? So Pranav, what is your favorite subjects? Accounts, costing, tax or law? Costing. टैक्स है आप लोगों का? ओ, कितने लोगों का टैक्स है? नाइस. टैक्स कलेक्शन में टैक्स बोले यार, ऐसा थोड़ी होगा. अरे ऐसा नहीं करते यार. अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है कि सब फैकल्टी को सब सब्जेक्ट क्या है उसमें क्या है. ऑफ कोर्स रोज कुछ ना कुछ रहेगा. हाँ वो तो है. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो भी मजेदार रहेगा. हाँ ट्विस्ट रहता है ना कुछ ना कुछ. श्रेयस, तेरा फेवरेट क्या है? हाँ सब्जेक्ट ही पूछ रहा हूं मैं, किसका पूछूंगा यार? बाकी बाकी मेरे को क्या करना है? अब तेरा फेवरेट कौन है? हाँ अकाउंट्स, ठीक है.
सब्जेक्ट का ही पूछा बेटा, एक्स वाई जेड का मैंने पूछा ही नहीं, सिर्फ एक्स ही है। अच्छा, एक्स है क्या, सिर्फ एक्स, वाई जेड अभी आना बाकी है। क्या बोल रहा है, बोला भाई, बोलना बोलना बोलना। चलो डन। सो फ्रेंड्स व्हाट आर वी डन विथ, इंडिविजुअल का हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, अब बचा कौन। अरे यार क्या अलग 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 पढ़ते बैठेंगे अपन, एक काम करते, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा, बाकी सब यार, बाकी सब एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुनो ना बेटा, सिंपल सी पॉइंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly or partly in India. Residents. Control and management wholly outside India. Straight answer, not resident. I will tell one line sir, एक सेकंड वो सुनो फिर लिख लो, सेम लाइक एचयूएफ, बराबर है ना बेटा, और कुछ भी नहीं है। अच्छा और आर आर आयन और बस, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ में आएगा। सेक्शन 6(4) इट्स ओके, लिख लो, जरूरत नहीं है सेक्शन नंबर इसका। Guys, I have a question. Think properly and tell. How many heads of income are there? 5. We know that salary, house property, PGBP, capital gains, other sources. अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी में जाएगा, वरना पीजीबीपी में जाएगा। प्रॉपर्टी अगर बेचे तो कैपिटल गेन में जाएगा, शेयर्स बेचे तो कैपिटल गेन में जाएगा। अगर किस में भी नहीं जा रहा तो इतना तो ज्ञान अपने पास सबको है। अभी मेरा क्वेश्चन एक है बेटा, अगर शिवतेजा ROR है, आप लोग सभी तो ROR ही है ना, is there any concept called ROR for salary income, RNOR for house property income, NR for capital gain income? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? समझे मेरा पॉइंट? वैसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। Once a person is ROR or RNOR or NR, the status remains same for every type of income. ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग इनकम का अलग अलग स्टेटस है। अरे समझे क्या? ये एक पॉइंट लिखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट सुनो, residential status of an individual is not related to residential status of spouse of individual. If my wife is ROR, doesn't mean that I am also ROR. मैं पूरा साल इंडिया में ही नहीं हूं, I'll become what? Non resident, because basic only gone. बेसिक कम से कम 60 दिन तो रहना चाहिए ना इंडिया में। 60 दिन भी अगर इंडिया में नहीं है
तो बेसिक की गया तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ना. बट माई वाइफ इज फुली इन इंडिया, शी विल बिकम ROR. सर एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन. In previous year 23-24, a person is ROR. Is it that 24-25 previous year में भी वो ROR ही रहेगा? Not necessary. So resident status has to be determined for each year separately. बराबर है ना बेटा? Please put the heading points to be noted. Points to be noted. Number one. Residential status. Residential status has to be determined for each previous year. Residential status has to be determined for each previous year separately. Next point. Once residential status is determined, once residential status is determined, comma, it will apply for all the heads of income. It will apply for all the heads of income. Next, last point. Residential status of an individual is irrespective of residential status of an individual is irrespective of residential status of spouse, residential status of spouse or any other family member. Or any other family member. That's it. दोस्तों, getting clarity everybody? Guys, reply everyone. So with this discussion, my dear friends, we are done with some major part of this chapter, that is about residential status. आपने को सिर्फ दो ही चीज पढ़ाई करना बाकी है चैप्टर में. That is the concept of, when I told you that there are two types of income called Indian income, foreign income. Indian income means income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue as in India. Foreign income means accrued and received both outside India. ये लिखा था आपको बेटा, उसमें दो सेक्शन लिखा था आपको में. Section 7 income deemed to be received in India. Section 9 income deemed to accrue or arise in India. वो दो सेक्शन पढ़ना बाकी है. वो दो सेक्शन अगर पढ़ लिए ना, हम बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं. फिर ये चैप्टर हो जाएगा. समझेगा? First chapter only took so much of time for us because that's not just basic concepts. So many concepts we learned there. Clear है ना? सबको समझ में आया ना? 101% friends. Can we go ahead and understand the next concept now? Yes? Listen now. First of all, we know that there are three categories of persons.
आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर। अगर एक बंदा एन आर है तो क्या उसको सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा। अगर एक बंदा आर ओ आर है तो क्या इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम बोथ विल बिकम टैक्सेबल। अगर एक बंदा आर एन ओ आर है तो क्या इंडियन इनकम फॉरेन इनकम बोथ विल बिकम टैक्सेबल, but foreign income only in two cases: business income controlled wholly or partly from India, profession income if setup is in India। बराबर है बेटा? सुनो बेटा एक बार, we are talking about section 5 scope of total income। Already we learned this, but still let me write once again: ROR, RNOR, NR। Income accrued in India, तीनों के लिए टैक्स बोले। सेकेंड केस, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वापस तीनों के लिए टैक्स बोले। बेटा बोलो नेक्स्ट, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इन इंडिया, अगेन तीनों के लिए टैक्स बोले। डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, अगेन टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री। दोस्तों बोलो, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉरेन इनकम business controlled from India, ROR taxable, RNOR taxable, NR not taxable। समझो बेटा मैं क्या लिखा? दोस्तों बोलो नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन इनकम, प्रोफेशन, taxable, taxable, not taxable। Any other foreign income will tax it only for ROR but not for RNOR and NR। Correct my dear friends? Because RNOR foreign income is taxable only in two cases. The two cases are business controlled from India, profession set up in India। दोस्तों clear? चलो last point, listen very clearly। Past untaxed profits remitted to India during previous year। मतलब बेटा एक 3-4 साल पुराना इनकम है, या तो 5 साल पुराना इनकम है, या 10 साल पुराना इनकम है, या तो 2 साल पुराना इनकम है, जो अनटैक्स था, इंडिया में टैक्स नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि फॉरेन कंट्री ने बोला इधर ही टैक्स पे करो, इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। I told you there is something called double tax avoidance agreement India has signed with more than 150 plus countries, जिसमें बताता है कि कौन सा इनकम कौन सी कंट्री में टैक्स होगा। अगर समझो 2 साल पहले शिवत एजा को यूएस में कुछ पैसा आया जिसपे मैंने इंडिया में टैक्स पे नहीं किया, बिकॉज इंडिया यूएस अग्रीमेंट के हिसाब से यूएस में ही टैक्स पे करना चाहिए था, मैंने यूएस में टैक्स पे कर दिया, इंडिया में टैक्स पे नहीं किया। बराबर है बेटा? पर अभी 2 साल के बाद वो पैसे को मैं इंडिया लेके आ रहा हूं, वो पैसे को मैं क्या कर रहा हूं, अब इंडिया में लेके आ रहा हूं करके वापस टैक्स भरना पड़ेगा क्या? बोलो बेटा, दैट इज नॉट एन इनकम एट ऑल। बराबर है बेटा? 2 साल पहले ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, इंडिया में नहीं हुआ पर बाहर तो हो गया ना, और अभी इसको इंडिया में लेके आएंगे तो वापस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना बेटा?
Everybody, sir. That's why in all the cases I put cross cross cross, because कोई भी केस में taxable नहीं है. Are we getting clarity? Everyone, sir. All of us, guys. This chart is a very, very important chart for us to solve so many problems. Take it, beta. Put the heading section 5. Title पता है आपको, scope of total income. सेक्शन 5 का टाइटल है स्कोप ऑफ टोटल इनकम. It is section 5 scope of total income. क्या बेटा? यस, ऑनलाइन फ्रेंड्स सबको समझ में आ रहा है क्या? रिप्लाई दो. यस सर. क्या बेटा?
हो गया बेटा? चलो माय डियर फ्रेंड्स, इफ एन इनकम इज इंडियन इनकम व्हाट विल हैपन? If an income is Indian income, what will happen? Taxable for ROR, RNOR, NR. If income is foreign income, taxable only for ROR, RNOR also in two cases. What are two cases? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Professional income, if setup is in India. सबको क्लियर है? पक्का समझ में आया बेटा? 100% my dear friends. Now listen, let me talk about section number 7. Section 7 talks about the concept of incomes deemed to be received in India. कुछ भी नहीं है बेटा इस सेक्शन में, बहुत ही सिंपल सेक्शन है. Section 9 will take some time, but 7 में कुछ भी नहीं है. Section 7 is what? Income deemed to be received in India. Now, what are those incomes which are deemed to be received in India? They only gave 4 points. Listen carefully. First point. Employer. Acha. Before I write. Sir, heard of something called PF? PF. PF में बेटा, there are different types of PF. PPF means Public Provident Fund, where anybody can go and contribute. Practically, there is something called Employee Provident Fund also, called as RPF, Recognized Provident Fund, which is recognized by Commissioner of Income Tax. Actually, Provident Fund का मतलब पता है ना? Provident Fund में होता क्या है? क्या पता है आपको? Provident Fund क्या होता है? मतलब मेरा जो Provident Fund है, मैं जिस पे पैसे लगाता हूँ, वो तो Public Provident Fund है बेटा. मतलब कोई भी पैसा लगा सकता है उसमें. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जॉब करने वालों के लिए. मैं हर साल क्या करता हूँ? मैं पोस्ट ऑफिस जाके वो पैसा पे करता हूँ. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसपे इंटरेस्ट आता है, उसपे कोई टैक्स नहीं है. बराबर है बेटा? बट जो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है? देयर इज वन सेपरेट अथॉरिटी कॉल्ड ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी. सुने क्या? व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज एन एम्प्लॉयर, देयर इज एन एम्प्लॉय थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर जेब से थोड़ा देगा. किसको पता है ये कहानी? एग्जैक्टली. समझ में क्या बोल रहा हूं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देयर इज ऑल्सो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. जो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कुछ जेब से निकाल के दे रहा है, जिससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, बट इंटरेस्ट आएगा, वो अलग बात है. बट जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो तो एम्प्लॉय के लिए फायदा है ना बेटा. स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. एंड व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली इज दैट एम्प्लॉयर विल मेक ए मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर एम्प्लॉय 10,000 कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर भी 10,000 कंट्रीब्यूट करेगा, तो एम्प्लॉय के लिए फायदा हो गया ना. वो प्रोविडेंट फंड इज लाइक ए सेविंग स्कीम बेटा. इट इज लाइक ए सेविंग्स स्कीम. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने क्या बताया? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. उस कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. आरपीएफ का मतलब है Recognized Provident Fund. Recognized Provident Fund is that Provident Fund which is recognized by Commissioner of Income Tax. Recognized by Commissioner of Income Tax. Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. क्या है बेटा पॉइंट? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ कितना परसेंट बेटा? 12% ऑफ सैलरी. इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का सैलरी अज्यूम करो 10 लाख रुपए, ठीक है ना बेटा? एम्प्लॉयर ने पीएफ को कंट्रीब्यूट किया 1,40,000. 1,40,000. अभी 1,40,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करने की वजह से फायदा किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को ही फायदा हो रहा है ना. बोलना बेटा, कितने का फायदा हो रहा है? 1,40,000 का फायदा हो रहा है. बट इनकम टैक्स क्या बोल रहे? बेटा एम्प्लॉय हम किसको टैक्स करेंगे बोलो? सिर्फ दैट कंट्रीब्यूशन विच इज बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी. सैलरी कितना है? 10 लाख. 12% कितना है? 1,20,000. 1,20,000 के ऊपर कितना गया?
So what is taxable is only 20,000. समझे क्या? फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग समझ गए क्या? पढ़ो फर्स्ट पॉइंट वापस. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वापस बोल रहे बेटा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. बोलो बेटा किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. सैलरी कितना है? एक एग्जांपल में 10 लाख, 12% कितना है? 10 लाख पे 1,20,000. पर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया? 1,40,000. व्हाट इज टैक्सेबल इज 20,000. समझे क्या? आई हैव ए क्वेश्चन. व्हाट इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख? If employer contributed 1 lakh, how much is taxable? Nothing is taxable because it does not exceed 12% of salary. समझे क्या? तो टैक्सेबल कब होगा बेटा? अगर एम्प्लॉयर पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉई का पीएफ अकाउंट में सैलरी के ऊपर 12% के ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो वो एक्सेस अमाउंट टैक्स हो जाएगा. एंड दैट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. समझेगा बेटा फर्स्ट पॉइंट? बोलो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट, इंटरेस्ट credited to RPF in excess of 9.5% per annum. I repeat again, interest credited to RPF, वापस बोल रहा बेटा सुन लो, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. मतलब क्या है सर? हम जो भी पैसे पीएफ में लगा रहे उस पर इंटरेस्ट आएगा ना. अगर समझो 10% इंटरेस्ट आया, लॉ इज टेलिंग 0.5% is taxable. Line पढ़नो बेटा. In excess of 9.5% per annum. So if interest is 12%, how much is taxable then? 2.5% is taxable. Interest is 8%. Nothing is taxable. समझ रहे क्या? ये ऑनलाइन में क्या बोल रहे हैं? 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन. हाँ बेटा, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करेगा. बराबर दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? यार बेटा बोलो ना यार प्लीज. ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉय जो जेब से पे कर रहा है उसका तो जेब से जा रहा है, फायदा किधर हो रहा है? बट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो तो फायदा हो रहा है ना. तो व्हाट लॉ इज टेलिंग? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ व्हाट परसेंट? 12% of salary will become taxable. In the same way, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum is also taxable. समझ रहे क्या? ये सब कौन से सेक्शन में दिए? सेक्शन 7. इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट उसे, और 2 पॉइंट है बेटा. ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम URPF to RPF. Sir, URPF stands for Unrecognized Provident Fund. RPF stands for Recognized Provident Fund. इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, सुन लो पहले, उसके बाद अपन लिखना चालू करते हैं. URPF, there is RPF. URPF means Unrecognized Provident Fund. RPF means Recognized Provident Fund. फर्क इतना ये, the fund which is recognized by Commissioner of Income Tax is called RPF, which is not recognized is known as URPF. दोस्तों बराबर है ना बेटा? सुन लो सर, there is employee contribution, there is employer contribution, there is interest on the contribution, and finally one fine day you will withdraw. दोस्तों बराबर? बोलो क्या लगता है आपको? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन लॉ इज टेलिंग नो ट्रीटमेंट, बट इफ इट इज आरपीएफ you will get deduction under section 80C. 80C. बट अगर यूआरपीएफ है तो 80C नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है भाई. समझ रहे क्या? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन URPF not taxable,
RPF taxable, and what is taxable is greater than 12% of salary. समझ रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? टेबल समझ में आ रहा है क्या सबको? URPF interest not taxable, but here it is taxable if it is greater than 9.5% per annum. ये 2 पॉइंट्स अपन जो अभी पढ़े उधर से आ रहा है, समझ रहे क्या बेटा एवरीवन? नेक्स्ट विथड्रॉवल, क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है आपको यूआरपीएफ में क्या होगा? बोलो बेटा। 100% टैक्सेबल है, क्योंकि हर साल तो उसको टैक्स नहीं करे ना। अरे देखना बेटा, हर साल में टैक्स करे क्या उसको, बट मैच्योरिटी जब करेंगे, विड्रॉ जब करेंगे, बैंड बजा देंगे तेरे को। और कैसा टैक्स करेंगे उसको सुन लो, वो भी सुन लो। सर हम जब विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें 4 चीजें, हम जब विड्रॉ कर रहे हैं उसमें 4 चीजें, क्या है 4 चीजें? एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा, बराबर है ना? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा, बराबर है दोस्तों? बोलो इन्होंने क्या बताया एक्ट में, सुन लो बेटा। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है तो नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उसका पैसा उसको वापस आ रहा है। मेरे भाई जो इंटरेस्ट और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है, इसको हम टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट वी विल टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज। बेटा समझ में आ रहा है क्या? somebody is asking सर टैक्सेबल एट व्हाट रेट? मैंने कुछ स्पेशल रेट कुछ बोला क्या? स्पेशल रेट नहीं बोले का मतलब क्या है? स्लैब रेट्स, खत्म कहानी। अगर स्पेशल रेट्स अगर होता तो मैं फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा चुका होता बेटा आपको, मतलब मैं नहीं पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, मतलब स्पेशल रेट कुछ नहीं। चलो बेटा कम बैक। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट हियर? आई टुक 2 कॉलम्स, यूआरपीएफ, आरपीएफ। यूआरपीएफ में हर साल कुछ नहीं होगा, बट जिस दिन विड्रॉ करेंगे बैंड बजा देंगे उसको। कैसे बैंड बजाएंगे? जो पैसे विड्रॉ करे उसको 4 चीजों में डिवाइड करेंगे। जो अपन खुद कंट्रीब्यूट करें और उस पर जो इंटरेस्ट आया, जो एम्प्लॉयर ने पैसा दिया और उस पर जो इंटरेस्ट आया। जो अपन खुद कंट्रीब्यूट करे वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि अपने पैसा अपने वापस आ रहा है, बराबर है? पर अपने पैसे पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो एम्प्लॉयर ने दिया और उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। गेटिंग माय पॉइंट? All this tax treatment is because it is a URPF, which is not recognized by commissioner. Clear? अगर recognized है, that means what? RPF। क्या लगता है आपको? बोलो। Straight answer, not taxable। हर साल टैक्स कर रहे हैं ना कुछ, बोलना बेटा। नॉट टैक्सेबल इफ सर्विस इज ग्रेटर देन 5 years। समझे क्या? इसका मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा। सुनो दोस्त, आपका नाम रोहित। सो लेट अस से वन ऑफ आवर फ्रेंड रोहित, आफ्टर फिनिशिंग सीए he joined one job. Let us say he joined a company known as Deloitte. He joined a company Deloitte and he has chosen provident fund also। मतलब क्या हो रहा है, हर महीना रोहित का सैलरी में से थोड़ा पैसा पीएफ में जा रहा है। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, रोहित एकदम खुश है, यार एम्प्लॉयर भी पैसे दे रहा है पीएफ के लिए, अच्छा पैसा जमा हो रहा है, ठीक है अच्छी बात है। 2 साल के बाद रोहित को लगा, यार Deloitte is not my place, I will leave the job and I'll go to KPMG। Big Four। He left Deloitte and he went to KPMG। What he can do is, whatever PF is, the PF account is there, he can continue the same PF account। He can continue the same PF account। और 2 साल काम किया किधर? KPMG। पूरा 4 साल एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद रोहित को लगा, यार हट, मैं जॉब ही नहीं करता, मेरा खुद का ऑफिस में ओपन करता,
I will start my own practice. I'll open my own office. I don't want to do job. I don't want to work under somebody. I will make somebody work under me. And what he has done? Resign the job. जॉब रिजाइन करके बाहर आ गए और खुद का प्रैक्टिस चालू कर लिया. ठीक है ना? इधर तक कहानी रोहित का समझ गए ना आप लोग? अभी आप मुझे बोलो, रोहित ने 4 साल जो काम किया, 2 साल उधर 2 साल इधर, 4 साल जो काम किया, हर महीना थोड़ा 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 पैसा पीएफ में गया, जो रोहित की जेब से गया, और थोड़ा पैसा एम्प्लॉयर ने भी दिया. अब वो पूरा करके जमा हो गया ना एक जगह पे. दैट कुड बी ए बिग मनी. नो नाउ एक 5-10 लाख तो जमा हो गया होगा ना यार. तो हर महीना थोड़ा थोड़ा, हर महीना अगर 20-20 हजार जा रहा है तो साल का कितना जाएगा? 2,40,000. 4 साल है तो 10 साल तक जमा हो गया. अरे 10 लाख तक जमा हो गया उसमें. अभी रोहित सोचा मैं कैसे भी आगे फ्यूचर में लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगा, मैं विड्रॉ कर लूंगा उसको. मैं क्या करूंगा? विड्रॉ करूंगा. मैं विड्रॉ कर लूंगा उसको. बराबर है ना? एक एप्लीकेशन फाइल करना है, विड्रॉ कर सकता है. वो विड्रॉ कर लिया. अच्छी बात है, विड्रॉ कर लिया. आप मुझे बोलो, इज इट यूआरपीएफ और आरपीएफ? आरपीएफ. प्रैक्टिकली एवरी प्रोविडेंट फंड इज आरपीएफ ओनली. प्रैक्टिकली हर प्रोविडेंट फंड का रिकॉग्निशन होता है. हर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर. सो मेजॉरिटी ऑफ द ऑल कंपनीज दे विल गेट अप्रूवल एंड दे विल ऑल हैव आरपीएफ. आप मुझे बोलो, अपना रोहित का जो प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ है यूआरपीएफ है? आरपीएफ है. तो ये केस तो नहीं है अपना रोहित का. रोहित का यही केस है. रोहित का आरपीएफ का केस है. अब रोहित का सर्विस इज मोर देन 5 years, लेस देन 5 years. 4 ही साल हुआ ना सर. 5 years मतलब जरूरी नहीं कि 5 साल एक ही कंपनी में हो, अलग अलग कंपनी भी हो सकता है. सारे मिलके देखेंगे अपन, बट सारे मिलके अपने दोस्त का कितना साल हुआ? 4 साल. 5 साल के ऊपर हुआ क्या? इफ सर्विस इज ग्रेटर देन 5 years, it is not taxable. If less than 5 years, tax treatment. If it's less than 5 years, what will happen? Tax treatment is same as URPF. मतलब taxable है. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, everybody, are we getting clarity on this point? All of us, guys, please reply बेटा. All of us, पक्का clear with this? सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? Very, very important concepts. So the 3 points what I taught you so far is that, एक पॉइंट है बाकी बाद में बोल दो. 3 पॉइंट क्या क्या पड़े बेटा? एक तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ व्हाट? 12% ऑफ सैलरी. फिर सेकंड क्या है बेटा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% per annum. Last one, transfer balance from URPF to RPF. क्लियर है बेटा? दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? ये लास्ट वाला का केस कब आ सकता है बोलो मैं? सुनो, एक एग्जांपल देता हूं, फुल क्लैरिटी आ जाएगा. रोहित इज डूइंग ए जॉब, फर्स्ट जॉब डेलॉइट. ओके, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट 2 साल हो गया. अब the provident fund was unrecognized provident fund. वो आरपीएफ नहीं था, यूआरपीएफ था. ठीक है ना बेटा? और हर साल हर महीना एम्प्लॉयर ने he is contributing 15% of salary. How much is contributing? 15% of salary is contributing. How much is contributing? 15% of salary. And interest is also coming at 10% per annum. Employer is contributing 15% of salary. Interest is also coming 10% per annum. Now what is the tax treatment for this? No tax treatment because URPF. बराबर है ना बेटा? बोलो ना बेटा? पर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, वापस बोल रहा हूं मैं, 2 साल के बाद अचानक one fine day URPF became RPF. अप्रूवल आ गया. बोलना बेटा, अगर अप्रूवल आ गया और ये 5 साल काम किया, विड्रॉ किया, तो टैक्स फ्री हो जाएगा ना? बोलना बेटा. बट पहले 2 साल
वो जब यूआरपीएफ था आपने टैक्स पे किया क्या? अगर पहले 2 साल वो आरपीएफ होता था तो टैक्सेबल होता था ना? क्या टैक्स होता था? 12% के ऊपर जितना कंट्रीब्यूट किया उतना टैक्सेबल है. इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर जो आएगा वो भी टैक्सेबल है. That's why they told if there is a transfer balance from URPF to RPF, employer contribution in excess of limit, that is 12% of salary, plus interest in excess of limit will become taxable. बराबर है ना बेटा? सिंपल वे में बोले तो रोहित का डेलॉइट का प्रोविडेंट फंड अगर यूआरपीएफ के जगह आरपीएफ ही होता था स्टार्टिंग से तो पहले 2 साल टैक्स लगता था ना बेटा? दोस्तों, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ. आई होप वी आर फुल्ली क्लियर. सबको समझ में आया बेटा? एवरीबॉडी? दोस्तों चलो स्टार्ट. Please put the heading section 7. Income deemed to be received in India. Section 7. Income deemed to be received in India. रेडी दोस्तों? चलो फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉयर contribution to recognized provident fund. Employer contribution to recognized provident fund in excess of employer contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary. In excess of 12% of salary. दोस्तों लिखे क्या? उसके नीचे एग्जाम्पल भी लिख लो ना. सैलरी 10 लाख, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 1,40,000. ये एग्जाम्पल लिख लो बेटा. डन. चलो सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ. सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट credited to RPF, interest credited to RPF in excess of interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. Interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum.
दोस्तों क्लियर है? थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम unrecognized provident fund, transfer balance from unrecognized provident fund to recognized provident fund, unrecognized provident fund to recognized provident fund. Bracket, employer contribution in excess of limit, employer contribution in excess of limit, and also interest credited in excess of limit, and also interest credited in excess of limit shall be taxable. Shall be what beta? Taxable. ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? चलो फर्स्ट पॉइंट, employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Second, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. Third, transfer balance from URPF to RPF. दोस्तों क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, I'll tell you, right? Then we'll discuss. Employer contribution employer contribution to pension scheme of central government. Employer contribution to pension scheme of central government. Employer contribution to pension scheme of central government notified. Employer contribution to pension scheme of central government notified under section 80 CCD, not cafe coffee day, that is section number only. Yeah, notified under section 80 CCD of income tax. बराबर है ना? 80 CCD. चलो बेटा, लास्ट वाला पॉइंट क्या वापस रिपीट करो. एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू व्हाट स्कीम? पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80 CCD. मतलब पेंशन स्कीम को अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया ना बेटा? अरे यार, हर रुपए जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय के लिए फायदे की बात है. देयर इज नो सेकंड थॉट इन दैट. आर वी क्लियर? That's it. Below, take this table of URPF and RPF. Important table. URPF का मतलब क्या है बेटा? Which is not recognized by Commissioner of Income Tax.
Friends, done? चलो बेटा, so what is section 7? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. बोलो बेटा कितने पॉइंट है उसमें? 4 पॉइंट है. पहला बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% of salary. Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Second beta, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. Third, transfer balance from URPF to RPF. Next point, employer contribution to pension scheme of central government, referred to in section 80 CCT of Income Tax Act. That's it. सबको क्लियर है यहाँ तक? 100% my dear friends. That is which section? Section 7. Income deemed to be received in India. So friends, what is section 5? Scope of total income. बोलो बेटा एक बार, what is section 27, 225A, 231, 234, section 3, section 4, section 5. Scope of total income. वही बेटा, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम आरओआर, आरएनओआर, एनआर, फॉरेन इनकम ओनली आरओआर, आरएनओआर इन 2 cases, बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. बराबर है बेटा. 61, 66, 61, 66 बेस्ड एडिशनल फॉर HUF. 63 कंपनी का क्या सीन है? Indian company always resident, foreign company non-resident. Bah. Indian company always resident, foreign company what? Only in India. Who? You or me or who? Foreign company. अरे क्या बोल रहे बेटा? Foreign companies only in India. मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल्स रख लो घर पे. क्या पोएम? पावर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. वाह वाह, क्या आंसर है यार, क्या आंसर है. व्हाट एन आउटस्टैंडिंग आंसर. पावर ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ. थैंक यू फॉर टेलिंग रॉन्ग आंसर. नाउ नोबडी विल फॉरगेट. बाय चांस कोई पावर बोलने वाला तो भी नहीं बोलता अभी. चलो बोलो बोलो बोलो. 63 क्या है? इंडियन कंपनी. और ये इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट ओनली इफ पोएम इज होली और पार्टली इन इंडिया. मरवा तो बस. ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेजी अकाउंटेंट्स. हाँ बोलो. इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट ओनली इफ पोएम इज ओनली इन इंडिया. क्या? हाँ क्या क्या पोएम? पोएम फुल फॉर्म क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. दोस्तों क्लियर है ना बेटा? बोलो ना यार. सेक्शन 3 सर. company previous year company section 63 बेटा, वो भी रेसिडेंशियल स्टेटस है बेटा. 210 एवरेज रेट ऑफ टैक्स. 229C मैक्सिमम मार्जिनल रेट. अरे लिखा ना यार फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस में. सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम. सेक्शन 4, सेक्शन 2 डेफिनेशंस. सेक्शन 1 for any act section 1 is title, extent, commencement. Title Income Tax Act. Extent whole of India including Jammu and Kashmir. Commencement 1st April 1962. Act 1961 है but commenced from 1st April 1962. बोला ना प्रीवियस ईयर असेसमेंट रहेगा. लॉजिक
बोलना बेटा. Section 3, Section 4, Section 5, Section 174. Person living India permanently or for long time, no shipping. 174B. अच्छा बी नहीं है ये क्या? ठीक है बेटा. ये क्या है? AOP BOI BJP AJP. AOP BOI AJP formed for a short duration or purpose. 175. Person likely to transfer property to avoid tax. 176. कौन था? कोई तो था. 87A. ये नहीं बोलते. 28A. 28B. ऑनलाइन क्या पूछ रहे हैं सर? टुमारो टाइमिंग. अरे रुकना मेरे भाई, जवाब तो दे. 115BB. Card games, horse race, betting, gambling. Correct, no? Yesterday when student was telling. So 115BB, cricket, football, badminton. अरे चिल्लर फेलो, वो स्पोर्ट्स है, गेम्स नहीं है वो. कार्ड गेम्स अलग है, स्पोर्ट्स अलग है. करेक्ट ना? क्रिकेट, बेटिंग, फुटबॉल विल कम अंडर कैजुअल इनकम. अरे वो तो स्पोर्ट्स है ना भाई. तो स्टूडेंट चलें, जैसा पत्ते वैसा फुटबॉल है. बेशरम, पत्ते खेलना जैसे कैजुअल इनकम. But playing cricket is a sport. It's a professional sport. दोनों एक नहीं है. बराबर है ना? जंगली खेलो, जंगली खेलो के क्या है वो? रम्मी, जंगली रम्मी. शिट. अच्छा ये तो रम्मी खेलो जीतो. अच्छा ये जंगली रम्मी. मैं क्या बोला था? अच्छा जंगली. Section 4, Section 5, Section 7. Income deemed to be received in India. You man. Correct, no? What is 87A? 175. Person likely to transfer property to avoid tax. 172. बोलो बोलो बोलो. शिप क्या हुआ? शिप तो आपका डूब गया क्या? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. सेक्शन 5, सेक्शन 61, सेक्शन 61A. डीम्ड रेसिडेंट. पढ़ा ना बेटा जी? कितने कंडीशन है उसमें? 4. बोल बेटा, बोल. 4 बोल. बोलो 3 क्या है? He must be an Indian citizen. Number 2, total income other than foreign sources greater than 15 lakhs. Number 3, he is not liable to tax in any other country by reason of his residence or domicile or any other criteria of similar nature. डोमिसाइल है वो, डुम्बो डम्बो नहीं है वो. डोमिसाइल. ठीक है ना बेटा? सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7. Income deemed to be received in India. 1, 2 friends are not telling answer only. They are telling. ये क्या है भाई? 27. 225A. India covers territory, territorial waters, that's it. Some friends are not telling anything, only they are telling waters. Water.
क्लियर है ना बेटा? चलो सेक्शन 63 इंडियन कंपनी always resident. Foreign company resident only. Poem is, what is poem? Power, place of effective management. दोस्तों क्लियर है ना? सेक्शन 9 अभी सीखेंगे. That is income deemed to accrue or arise in India. Section 7 is income deemed to be received in India. Section 9 is income deemed to accrue or arise in India. सबको क्लियर है? Shall we stop here? Wonderful. Yeah, one small thing before we go. Can we have the class tomorrow at 9 o'clock? चलो वोटिंग चाहिए क्या? How many of you say same 11 o'clock? 11 o'clock रोज ऐसे स्टार्ट करते हैं सिर्फ 3-4 लोग. How many of you say 9 o'clock is okay? Majority. See you all tomorrow at 9 a.m. Thank you so much guys. Take care. और कल मिस मत करना बॉस. कल अपने मटेरियल का बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, तो कल बिल्कुल मिस मत करो. बहुत अच्छा डिस्कशन रहेगा, तो प्लीज डोंट मिस गाइस. ऑनलाइन फ्रेंड्स टेक केयर. आप कल भी अपना यूट्यूब पे रहेगा कल अपना, तो 9 बजे मिलते हैं कल सुबह. थैंक यू सो मच. बाय बाय. 9 to 5 जस्ट ओके. 2.5-3 घंटा मैक्स. 2.5-3 घंटा मैक्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो बेटा ऑनलाइन फ्रेंड्स 9 o'clock मिलते हैं कल सुबह. मिस मत करना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा. और कल मॉड्यूल 1 पक्का लेके आना सब लोग. उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को कल. बाय बाय. शायद आपका अकाउंट्स क्लास यहीं पे होगा शायद आज. श्योर? आई डाउट. एक बार